significant move, the Ministry of Defence is now set to introduce comprehensive new rules regulating books which are written by serving or retired army personnel. The proposed rules come in the wake of the controversy surrounding former Army Chief General Naravane's unpublished memoir, 4 Stars of Destiny. Under the new framework, the Official Secrets Act will now be formally incorporated into the clearance process. This means any classified or sensitive information in a manuscript will first be verified under the provisions of the Act before publication. Previously, there was no clearly written rule, and consolidated rules required Ministry of Defence clearance for retired officers before publishing of the books. Now, the manuscript in this case will now have to be first sent to the MoD before it can be shared with the publisher. And under the new system, it will be mandatory for all the authors to obtain clearance from the Ministry of Defence or Army headquarters before approaching publishers. Unlike earlier practice, writers will not be allowed to offer manuscripts to publishers without completing the approval process. For serving personnel, prior written permission has long been mandatory under Services Rule and the Army Rules of 1954. However, retired officers were not governed by a single detailed publication framework, even though the Official Secrets Act remained applicable for life. The new guidelines aim to create a uniform, structured and stricter approval process, especially for retired personnel. All right, in a significant move now, the Defence Ministry is set to introduce comprehensive new rules which will regulate books written by serving and retired armed force personnel. The proposed rules come in the wake of controversy surrounding Army Chief General Naravane's unpublished memoir, 4 Stars of Destiny. Under the new framework, the Official Secrets Act will now be formally incorporated into the clearance process, which means this, that any book written by a retired personnel will now first have to go through MoD before it can be shared with the publisher. So no manuscript can now be shared with the publisher as well. The new rules will mean that classified and sensitive information in any manuscript will be first verified under the provisions of Official Secrets Act. Previously, there was no clearly written or rule. There were consolidated rules which required personnel to get clearance from the Ministry of Defence for retired officers before publishing books, but the new comprehensive framework is set to now be applicable to retired officers as well. Joining me on the show is my colleague Anju Nirvan. Anju is tracking these details very closely. Anju, क्या है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन और किस तरीके से ये पहले से डिफरेंट है? पहले काफ़ी सारी गाइडलाइंस हुआ करती थी, अब एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क सरकार लेकर आ रही है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही जो कि रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक नया कानून लेकर आएगा कि जब अगर वो कोई बुक लिखते हैं तो उसके क्या नए रूल रेगुलेशन होंगे। नए रूल रेगुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बुक्स की पब्लिकेशन के लिए, यानी कि जो किताब को पब्लिश करते हैं उनके पास भेजने से पहले कि उस बुक को आपको रक्षा मंत्रालय को देना पड़ेगा या फिर सेना मुख्यालय यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर में आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो पूरी बुक की स्क्रूटनी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी और उसमें अगर क्लासिफाइड जानकारी नहीं है, उसी के बाद उस किताब को, उस बुक को आप पब्लिकेशन के पास भेज सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि अगर आपने अपनी किताब में, यानी कि जो ऑफिशियल है, अगर उसने रिटायर्ड ऑफिशियल है, अगर उसने अपनी किताब में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई जानकारी लिखी है तो भी उसको क्लैरिफिकेशन के लिए, यानी कि उसको पास करवाने के लिए उस किताब को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की भी मंजूरी ज़रूरी होगी। तो इस तरीके के नए नियम जो हैं वो लागू किए जाएंगे। इससे पहले जो है वो किताबों को लेकर जो रिटायर्ड ऑफिशियल से जो बुक्स लिखते थे उसको लेकर कोई रिटर्न एक तरीके का प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं था, लेकिन अब एक प्रॉपर उसका ड्राफ्ट होगा, यानी कि एक तरीके की पूरी बाइबल होगी जिसमें तमाम वो नियम और कानून लिखे होंगे जिसके तहत किताबों को आप पब्लिकेशन के पास भेज सकते हैं और उसके बाद आपकी बुक जो है वो पब्लिक में आ पाएगी। जी, अब ये कहना सही होगा कि ये नए रूल्स
इसलिए लागू किए जा रहे हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी है जनरल MM नरावने की बुक को लेकर, जहां पब्लिशर ने कहा कि हमने बुक पब्लिश नहीं की, इसके बावजूद ऑपोजिशन लीडर्स कॉपी दिखा रहे हैं पब्लिक को। वो बता रहे हैं कि बुक पब्लिश की जा चुकी है, देश के बाहर पब्लिश की जा चुकी है, देश में अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्लियरेंस अवेटेड है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखा, जनरल नरवणे की जो बुक है वो पब्लिकेशन के लिए जो पेंगुइन इंडिया है उसके पास जा चुकी थी, और साथ ही साथ पैरेलल ऑन सेम टाइम वो बुक, उस किताब को जनरल नरवणे ने MoD के पास क्लेरिफिकेशन के लिए या उसको पास कराने के लिए भेजा। यानी कि ये दोनों कार्रवाई सेम टाइम पे हुई। लेकिन अब जो नए नियम होंगे उस नए नियम में ये बदलाव किया जाएगा कि पहले किताब की आपको MoD से, रक्षा मंत्रालय से उसको पास करवाना होगा, और उसके बाद वो पब्लिकेशन के लिए जो पब्लिशर है उसके पास जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी सख्ती भी की जाएगी, यानी कि आप ऐसी कोई भी क्लासिफाइड जानकारी उसमें साझा नहीं कर सकते उस किताब में, जिससे कि देश को, देश की गोपनीयता को नुकसान हो। यानी कि अगर आप ऐसी कोई जानकारी करते हैं तो उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लाया जाएगा। तो ये तमाम जो बदलाव हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी संवेदनशील जानकारी बाहर ना आ जाए जिससे कि देश को और हमारी आर्मी को या हमारी डिफेंस फोर्सेस को नुकसान हो। All right, so major significant changes there incoming as far as books written by retired army officers is concerned. Prior to these rules, up until now, a writer, an author could send the book for publishing to the publisher and also send it parallelly to the Ministry of Defense. But now they will first have to send the manuscript to the Ministry of Defense before they can send it to the publisher, to ensure that there is no gap in the system and a book doesn't get published at all without Ministry of Defence's intervention. And Anju, thank you very much for all those details. We're going to shift focus now